Hello students, the question is, at steady state, the charge on the capacitor as shown in the circuit below is dash microcoulombs. So the problem is based on the topic electric circuits, and in particular the use of passive elements such as resistor and capacitors in a circuit, how they behave in a particular circuit when energized by a DC source. So carefully, if you see this term here, steady state means that the circuit is settled. The circuit is settled in the sense that suppose if there is a key, and if the key is pressed, then just after the pressing of the key, the behavior is known as the transient behavior, and when the key is pressed for a long time, then the steady state behavior is attained. And in steady state behavior, we means that the passive element remains in a certain state. So if we want to analyze the status of a capacitor in steady state, suppose there is a capacitor and we apply a DC across it. We apply a DC across this particular capacitor for a very long amount of time. So what happens that it becomes open circuit. Suppose if there is a key here and we just press the key, just close this key, then for just a moment it becomes closed, it becomes charged instantaneously if there is no resistive element here, and it becomes in the steady state condition after a few seconds after the charging. So this is the case here, that the capacitor is in the steady state, and when it is in the steady state, from the impedance equation of the capacitor, that Xc is equal to 1 upon j omega c or omega c. So for the DC signal, omega is 0, and omega 0 means, the radiant frequency 0 means X of c, that is the capacitive reactance, becomes infinite. And when the reactance is infinite, it means that it is open circuit. So this particular capacitor behaves as an open circuit for the steady state condition. And whole current from this battery passes through these two resistors, which acts like the resistors in series. So this 10 ohm resistor and 15 ohm resistor, these are in series. So in this way, we can find out the current in the circuit. So the current is equal to the total voltage, which is 5 volt here, upon the total resistance, which is 10 plus 15 means 25. So it is 5 upon 25. So this is the 5 upon 25 ampere. This is the current, which we can write it as 1 upon 5 ampere or 0.2 ampere. So 0.2 ampere current flows through these two resistors. And the voltage across the capacitor, can be calculated now, as the capacitor is parallel with respect to this 10 ohm resistor. The capacitor is in parallel with 10 ohm resistor. It means that whatever be the voltage across the 10 ohm resistor, it is same as the voltage across the capacitor. So now the voltage across the 10 ohm resistor is given by the Ohm's law as 0.2 ampere current, which is passing through it, multiplied by the 10 ohm resistance. So this comes out to be 2 volts. So this value comes out to be 2 volts. So 2 volt is the voltage across the resistor. And now the charge across the capacitor is given by the formula Q equals to Cv. And C is given as 8 microfarads. And V we have calculated as 2 volts. So this becomes 16 microcoulombs. So we can say that our answer is 16 microcoulombs. So this is the answer. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस जो है चार्ज क्या होगा। यहाँ एक सर्किट दिया गया है, सर्किट में दो रेजिस्टर लिए गए हैं 10 ओम और 15 ओम ईच, और जो 10 ओम का रेजिस्टर है उसके पैरेलल में कैपेसिटर को लगाया गया है। एक 5 वोल्ट की बैटरी ली गई है। यहाँ पे सर्किट में कोई भी की वगैरह शो नहीं की है, और ये कहा गया है कि सर्किट स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब सर्किट जो है उसमें करंट सेटल हो चुकी है। इसके अलावा ट्रांजिएंट स्टेट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिसमें कि कोई एक स्विच लगाया सकता है, स्विच को एकदम से क्लोज किया तो ठीक उस इंस्टेंट में, उस मोमेंट पे सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, वो अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो ट्रांजिएंट बिहेवियर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे स्टेडी स्टेट बिहेवियर की बात की जा रही है। स्टेडी स्टेट बिहेवियर में सीधे सीधे कैपेसिटर जो है वो पूरा चार्ज होल्ड कर चुका होगा अपना,
जो कि उसे मिला होगा इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आने की वजह से। कैपेसिटर के बिहेवियर की अगर हम बात करें तो उसकी रिएक्टेंस की इक्वेशन को जानना ज़रूरी है, जो होती है यहाँ पे जे ऑपरेटर है, आप देख सकते हैं इट इज़ 1/ओमेगा सी, इसको हम केवल 1/ओमेगा सी कह सकते हैं। तो ओमेगा होती है रेडियन फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो डीसी सिग्नल के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डीसी सिग्नल एक कांस्टेंट सिग्नल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। जब आप डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे तो एक्स ऑफ सी हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रिएक्टेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट, यानी कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट का मतलब एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, कोई भी करंट इस कैपेसिटर के थ्रू अब नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट जो है वो 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू होती हुई और फिर 15 ओम के रेजिस्टर के थ्रू होती हुई जाएगी। तो ये दोनों रेजिस्टर्स एक तरह से सीरीज में आ जाएंगे, और इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट होगी वो बराबर होगी टोटल वोल्टेज विच इज़ 5 वोल्ट जो अप्लाई की गई है अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 10 और 15 का। तो इस तरह से 5/15 ये वैल्यू आती है 1/5 एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर। अब अगर हमें चार्ज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हमें पहले वोल्टेज भी निकालनी होगी इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज के लिए हमें देखना होगा कि जो पैरेलल में एलिमेंट लगा हुआ है 10 ओम का रेजिस्टर, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। उसके लिए हम सिंपल ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर से हम वोल्टेज निकाल लेते हैं 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगी, उसको हम यूटिलाइज कर देंगे इस फॉर्मूले में, Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूले में। C की वैल्यू हमें नोन है 8 माइक्रोफेरेड, 2 वोल्ट हम निकाल ही चुके हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है 16 माइक्रोकूलम्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।